So in this video series, we are going to discuss whatever has been there in economics related to the industry part. Okay. So industry के साथ ही continuation में पढ़ेंगे तो it would be beneficial. So now first of all, economics talks about that we have done a very good achievement in the industrial part. Okay. So for example, that some of the aspect which has been taken by the government. Okay. So that is good and services tax, insolvency and bankruptcy code. Okay. Introduction of inflation target regime like monetary control. Your monetary policies committee MPCs, announcement of a bank recapitalization, progress of Aadhaar enabling a use it for target delivery system. So all of these reforms which has been taken by the government. Apart from that, also some of the reform has been taken. One of that demonetization also being considered as to be a reform, which showing the government intention to curb the black money. So this type of reforms which the government has taken, it has been recognized at the world level. Okay. So it has further. Government has taken some of the sector specific steps as well. So we are going to discuss all of these things. For example, GST, IBC, all these things we will discuss in a different video series altogether. Aadhaar, bank recapitalization, all of things. For example, insolvency, your Aadhaar and your inflation target we will discuss into the banking and inflation part. Inflation and monetary policies part maybe हम discuss करेंगे this inflation target again. And sector specific part we are going to discuss here. Now इन सब का इफेक्ट क्या हुआ? इन सब के दो इफेक्ट हुए. वन इज आवर वर्ल्ड our ease of doing business ranking has improved by 30 points, which is a very big jump. Historical is very big jump, and further you should know that it is being given by the World Bank report के हिसाब से we have jumped to the 30 level. Further Moody एक rating agency है Moody's. Okay, this is also has improved our credit rating. तो credit rating क्या है वो हम थोड़ा सा देखेंगे. तो it has been helpful, that is our rating has increased. Okay, so this is the one thing. Other reform which the government has, this is various measure which has been mentioned in the economic survey, like online application. Industrial license, for online application for the licensing, industrial entrepreneur memorandum. Okay, 20 सर्विसेज को एक डिजिटल पोर्टल के साथ जोड़ के. दिस आर द वेरियस थिंग्स व्हिच हैज बीन डन. डॉक्यूमेंटेशन को कम से कम किए. तो हमें इतना डिटेल में तो नहीं जाना, बट या वी शुड अंडरस्टैंड ये वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट का ये रैंकिंग का मतलब क्या होता है, मोडीज की रैंकिंग का क्या मतलब है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. ओके, सो नाउ रीजन फॉर क्रेडिट रेटिंग के इंक्रीज होने के बारे में वी हैव सीन दैट क्रेडिट रेटिंग, व्हाट इज द क्रेडिट रेटिंग, इट टेल अस अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड विद द रेटेड आइटम. ओके, सो अब कंट्री की क्रेडिट रेटिंग है. ओके, तो रिस्क एसोसिएटेड विद द कंट्री, हम कह रहे हैं कि इंडिया की क्रेडिट रेटिंग इंक्रीज हुआ. इफ यू लुक एट द प्रीवियस स्लाइड, तो हमने इसमें कहा कि मोडीज हैज इंक्रीज द इंडियन सोवरन क्रेडिट रेटिंग. अभी हर चीज का एक मतलब है यहाँ पे. इंडिया मतलब इंडिया की रेटिंग, सोवरन इज नथिंग बट योर गवर्नमेंट, यू कैन से दैट, जो कि हाईएस्ट पावर है इन इंडिया, दैट इज सोवरन पावर, दैट इज इंडियन गवर्नमेंट क्रेडिट रेटिंग. की गवर्नमेंट की क्रेडिट रेटिंग इट हैज इंप्रूव्ड. कि मतलब यू कैन से दैट if credit rating is good, then you are more comfortable to give the money to that person. Okay, if my credit rating की बात करेंगे तो मेरी credit rating अगर अच्छी है तो you will be more comfortable to give me the loan, give me the money. In case my credit rating is not good, then you will little bit discouraged to give me the money, or in case you will give me the loan तो आप higher interest rates मार्क करेंगे. तो risk credit rating is telling you the how much risk you are having. Okay, so now sovereign country credit rating give investor insight into the level of risk associated with the particular country, which is also include the political risk. Okay, for example अगर इंडिया में let's say इंडिया की क्रेडिट रेटिंग में अगर let's say डेमोक्रेटिक ना होता, okay, इट्स वुड बी मोर लाइक you can say that it's मतलब कभी कुछ जैसे पाकिस्तान की तरह, sometimes डेमोक्रेटिक, sometimes under the military rule, so it's a very risky to give the money to the Pakistan government. Okay, so in the same way that is political risk also being associated with this credit rating. And now अच्छा rating लेना जरूरी क्यों है, क्योंकि we are dependent upon the external money. If you look at the globalization lectures, external world lecture, there you will see that we are having lots of credit deficit कि lot of current deficit, but हमारा कैपिटल सरप्लस है. तो दैट मीन्स कि हमें अपनी डेवलपमेंट के लिए, हमें अपना बाहर से सामान खरीदने के लिए बाहर से मनी चाहिए रहता है. ओके, सो दैट इज योर दैट्स वाई बिकॉज वी रिक्वायर द मनी फ्रॉम आउटसाइड, सो हमें रेटिंग अच्छा होना चाहिए. अगर यूएस का रेटिंग बेकार भी तो चलेगा, क्योंकि यूएस डजंट रिक्वायर द एफआई एंड एफडीआई. ओके, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इट्स नॉट दैट वहाँ पर एफडीआई एफआई जीरो है. इट्स जस्ट कि फॉर डेवलप्ड कंट्री इट मे नॉट बी दैट मच रिक्वायरमेंट ऑफ एफडीआई एंड एफआई. नाउ sovereign credit rating it depend upon past history. अब ये किस पे डिपेंड है? past history borrowing and paying of debt, future economic potential की आगे फ्यूचर में कैसे ग्रोथ करेंगे, पॉलिटिकल रिस्क कितना की, ये तो नहीं है कि
डेमोक्रेसी खत्म हो जाए या फिर एकदम से मिलिट्री रूल आ जाए या फिर एक कोलिशन गवर्नमेंट बने तो उससे पॉलिटिकल रिस्क बढ़ जाता है. इकोनॉमिक रिस्क की फिजिकल डेफिसिट डेट टू जीडीपी रेशियो दे आर द वेरियस पैरामीटर विच सॉवरन क्रेडिट रेटिंग टेक एज एन इनपुट. बट एग्जैक्ट देयर इज कि एग्जैक्ट कौन कौन से इनपुट ले रहे हैं वो अभी तक नहीं पता है. इट्स अ वेरी सीक्रेट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट रखते हैं. दैट इज एजेंसी डोंट प्रोवाइड एनफ डिटेल on how they determine the rating. This has been statement given by the European Commission. Okay, so now and you can refer this link where this statement has been taken. So in a way हमें पता ही नहीं कि मोदी क्या क्या पैरामीटर ले रहे हैं. Okay, so now in the previous year's economic survey lots of criticism has been there on this credit rating agency कि we are doing very good in many of the areas. So if you look at our past history we are very good in terms of meeting our obligations. Okay, इकोनॉमिक पोटेंशियल भी हमारा अच्छा है. डेट टू जीडीपी रेशियो इज ऑल्सो डिक्रीजिंग. ओके, तो फिजिकल डेफिसिट ऑल्दो आई नोट से इट्स डिक्रीजिंग बट या इट्स ऑन द डिक्रीजिंग पार्ट. इस ईयर को छोड़ देता हूँ, इट वाज ऑन द डिक्रीमेंट पार्ट. यू कैन रेफर टू आवर एफआरबीएम lectures to know more about the fiscal deficit. तो what the economic survey was saying, last year economic survey was saying कि सभी थिंग अच्छी है तो why our rating is not improving. Okay, तो लगता है कि लास्ट ईयर सर्वे मोदी मस्ट हैव स्टडीड, तो उसने मोदी ने लास्ट ईयर का सर्वे पढ़ा और उसके बाद उसने हमारी रेटिंग इंक्रीज कर दी. ओके, तो नाउ दीज आर द वेरियस रेटिंग by various rating agency. यहाँ पे मैंने 3 ही शो करी है, but it's not only 3 rating agency, but these here most popular rating agency, Moody's, S&P and Fitch rating. Okay, these are all the rating agency and सभी rating agency का मतलब है. For example, if a country is having triple A rating, okay, like this A, small a, then it's a prime member. It basically means कि आप इनको पैसे दे दो, ये तो definitely return, there is zero risk is there. Okay, and where we are lying, that is more important for us. If you look at our ratings, so our rating is this. Earlier our rating is Baa3. Now Moody's has improved our rating. Now it's a Baa2. It's a new rating our. Okay. Now S&P rating is triple B negative, and Fitch rating is also triple B negative. Okay. So here you can see that हमारा जो rating है, it's a lower medium grade. Okay, if I go to the previous slide, so you can see that it's a premium grade, then high grade, then upper high grade, lower medium grade. Now after lower medium grade we have the non investment grade कि हाँ इस पर तो बिल्कुल ही मतलब इन if any country is having this type of a rating तो उनका तो बिल्कुल ही नेगेटिव है. it's very negative to give them the money. और इसके means it's like this कि they defaulted many a time, and if you go further below and then your rating is degrading, that is this is where risk is increasing. That is they will not pay the money. Okay, तो हम कहाँ लाई कर रहे हैं? If you look at this, we are lying here in Moody's, and S&P में we are lying here, and Fitch में we are lying here. मतलब एक छोटा सा पुश चाहिए हमें यहाँ पर गिराने के लिए, इस रीजन में गिराने के लिए. और as soon as we will come into this region, तो FDI, FII और जितना भी फॉरेन का मनी आ रहा है वो आना कम हो जाएगा. Okay, because there is a default that I will not गेट द मनी. अब ये नहीं कि वो सारा मनी गवर्नमेंट को ही देते हैं, बट गवर्नमेंट इज द सेफेस्ट सोर्स, कंसिडर टू बी द सेफेस्ट सोर्स. तो गवर्नमेंट सेफेस्ट सोर्स कंसिडर करे तो अगर वही डिफॉल्ट करने लग गया तो और तो लोग डिफॉल्ट करेंगे. दैट इज व्हाट इज द थ्योरी गोज बिहाइंड दिस. सो वी आर एट द बॉर्डर सिचुएशन फॉर S&P एंड फिच. यू कैन से दैट मोडी में थोड़ा सा अच्छा हुआ है. दिस इज अबाउट लोअर मीडियम ग्रेड. बिलो दैट वी हैव द नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड. नाउ so if you look at our grading, it's like this. Rating is like this: Ba2 by the Moody's, S&P ट्रिपल बी नेगेटिव, फिश ट्रिपल बी नेगेटिव, एंड रशिया का ये चाइना का ये है. तो पिछली बार अरविंद सुब्रमण्यन, दैट इज अवर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ही इज हैविंग वेरी मच, ही हैज डिस्कस्ड अ लॉट कि चाइना के इतना अच्छा क्यों, हमारा इतना बुरा क्यों है, बिकॉज चाइना इज ऑल्सो ऑन दोज पैरामीटर्स नॉट डूइंग वेरी गुड विच आई जस्ट डिस्कस्ड. सो नाउ फॉर अस इट्स इंपॉर्टेंट कि क्या क्या रेटिंग ईच रेटिंग एजेंसी इज हैविंग. फर्दर इन रेटिंग्स का मतलब क्या है. ओके, फर्दर अलॉन्ग विद रेटिंग वी आर ऑल्सो हैविंग द Ba2 स्टेबल. स्टेबल का मतलब ये रहता है कि ना ही अब ऊपर जाएगी कुछ दिनों के लिए, ना ही नीचे जाएगी. Okay, so that is the stable mean. If I say Ba2 positive, तो मतलब there are higher chances that it will go above. If there is a Ba2 negative, then there is higher chances that it can go below. तो presently हमारी rating अगर appropriate word of what is our rating by Moody's, it's a Baa2 stable. कि हम अभी रुके हुए हैं यहाँ पे, ना ऊपर जा रहे ना नीचे जा रहे. Okay, so earlier prior to our rating Ba2, our rating was Ba3 positive. ओके, सो पहले हमारी रेटिंग थी Ba3 पॉजिटिव, दैट इज देयर हायर चांसेस दैट विल गो अबव. ओके, पॉजिटिव व्यू था, अब स्टेबल व्यू है. रेटिंग Ba3 थी, व्यू पॉजिटिव था, अब Ba2 रेटिंग है बट व्यू स्टेबल है. ओके, सो दिस इज अबाउट द रेटिंग पार्ट. नेक्स्ट पार्ट विच इज
has been internationally recognized is ease of doing business. Okay, so ease of doing business, if you look at the table, so there is a 10 parameter on which rating has been given. So you can see that we have improved in 6 out of 10 parameters. Okay, so 6 out of 10 parameters improved. This is information is important for exam perspective. Further, if you look at, these are the ranking at the world level. What is the rank? What is our ranking in terms of, for example, if term of if this you starting a business. Okay, so what is our ranking in terms of starting a business? Okay, dealing with the construction permit, what is our ranking? Okay, so now here ranking बहुत बुरा है. For example, here although we have improved, but ranking is 181. Okay, although we have improved in, let's say, enforcing the contract, but ranking is 164. Okay, so ranking overall बुरा है, but थोड़ा सा improvement हुआ है. Okay, so now रैंकिंग करते करते देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डिस्टेंस टू फ्रंटियर स्कोर. तो डिस्टेंस टू फ्रंटियर स्कोर का मतलब सिंपल लैंग्वेज में हम बोलेंगे, लेट्स से इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट का लेवल कुछ ये है. ओके, दैट इज वट आर द कॉन्ट्रैक्ट इज देयर, दैट इज विद इन 7 months कॉन्ट्रैक्ट इज इन्फोर्स्ड और विद इन 7 days. ओके, आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जाम्पल. तो एग्जाम्पल की कोई सैनिटी नहीं है, जस्ट फॉर इलस्ट्रेशन पर्पज. ये बेस्ट केस है ऑल ओवर द वर्ल्ड. ओके, सो नाउ वट वी विल हैव, वी विल कैलकुलेट अवर डिस्टेंस टू दिस फ्रंटियर, कि हमारे इंडिया में कितना टाइम लगता है. और इंडिया में बेसिकली दे लुक एट मुंबई एंड दिल्ली ओनली. हमारे इंडिया में लेट्स से इट टेक्स 70 days. तो डिस्टेंस टू फ्रंटियर विल बिकम 63 years. तो हायर द डिस्टेंस टू फ्रंटियर, डिस्टेंस टू बेस्ट स्कोर, so worse for the country. Okay, so that is what is ease of doing business is. And for us it's a DTF, important to remember in how much parameter we have improved. Okay, what is our overall ranking, who gives this ranking, World Bank gives this ranking. Now another thing which is important is, if you look at our ranking in the protecting minority investor, we are ranked very much. Okay, so we are ranked very good, that is 4th. This overall rank is 4th in terms of enforcing the minority investor. Minority investor क्या होता है, let's say this is a company. ओके, सो इस कंपनी, सॉरी दिस इज अ कंपनी, मारुति कंपनी है, इसके अंदर मान लो मेरा 1% शेयर होल्डर है, तो मैं माइनॉरिटी इन्वेस्टर हो गया. तो माइनॉरिटी इन्वेस्टर का इंटरेस्ट बहुत अच्छे से रखा जाता है. एंड इनफैक्ट सेबी शुड बी अप्लाउड फॉर दिस, क्योंकि सेबी इज द मेन रेगुलेटिंग एजेंसी फॉर दिस शेयर मार्केट अदर थिंग्स. सो नाउ प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्वेस्टर, वी आर रैंक वेरी गुड. सो इसको याद रखें तो बेटर रहेगा. फर्दर वी ऑल्सो नीड टू रिमेंबर दिस 164 रैंक. वाई दिस 164 rank is need to be remembered? That will be clear once we will do one of our video which is totally on this enforcing the contract only. Okay, so इसके अलावा अभी सभी रैंक याद रख सकते, that is well and good, but I believe that it's not feasible to remember all of the rank, but 4th rank you should definitely remember, and overall rank. Now so this I am having the indifference, right? Let's skip that part. Okay, so now this is this table. Look at this table. This table is basically comparing the 3-year rankings on various these 10 parameters. Okay, so let me here, that is for example in 2017 we are having the 137 ranking, then we are having the 26 ranking in getting the electricity. Now we are having the 29 ranking. Okay, तो यहाँ पर 3 का फॉलो है. तो you can look at this table and you can get a view of all this table. तो although याद रखने का जरूरत नहीं है, that I am repeating again and again. Now so why in ranking has improved, what parameter I have already discussed in the beginning of this session. So now like good and services tax, insolvency, bankruptcy, demonetization, all those stuff is there. Now what is the economic survey क्या कह रहा है, what the Ministry of Finance is saying, कि there are a few measures which we have taken, which India has taken, but World Bank has not recognized it. Okay, has not acknowledged this. So these are the various reforms which we have done, which should be recognized while giving the ranking. One is the construction permit, that is now total number of construction permit requires is 8. Okay, number of purchases requires 8, number of purchases are required. Further simplifying the trading across the border, there is a less hurdle is there. Enforcing the contract, Maharashtra and Delhi has established a commercial division. Okay, commercial division, that is commercial division का मतलब हो गया जो कि वही contracts, that is जो भी commercial nature contract, for example you are having the contract of supplying the car to or supplying the raw material to some XYZ company, तो इट्स अ कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ पर कोई डिस्प्यूट आता है तो उसके लिए वी आर हैविंग द डेडिकेटेड डिफरेंट बेंच. ये सिंपल कोर्ट में नहीं रहेगा कि अब सुप्रीम कोर्ट में अगर हाई कोर्ट में रहता है तो इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम, देयर इज लॉट्स ऑफ केसेस आर देयर. नाउ वी आर हैविंग ए dedicated bench for this thing, that is also not be recognized. Getting credit, now this is also, this we are going to discuss in banking part, but here I will give you the feel that surface X होता है एक चीज under which gives the power to the banks to
अटैच द एसेट ऑफ द डिफॉल्टर, लाइक मैंने अगर लोन लिया है और आई एम नॉट पेइंग बैक दैट लोन, आई एम नॉट पेइंग बैक दैट लोन, देन बैंक कैन अटैच माई एसेट एज पर द सारफासी एक्ट. नाउ देयर इज एन अमेंडमेंट इन सारफासी एक्ट हैज बीन डन so that whatever the money by selling the my stuff, for example I am the person who has defaulted on loan, मैंने लोन रिपे नहीं किया तो वो मेरा स्टफ बेचने लगेंगे, तो उसको बेचने के बाद वट एवर द मनी विल कम दैट विल फर्स्ट गो टू द सिक्योर्ड क्रेडिटर. सिक्योर्ड क्रेडिटर एक्चुअली वो होते हैं जो हु हैव गिवन द लोन अगेंस्ट सम कोलैटरल. ओके, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर के पास सबसे पहले जाएगा इनफैक्ट बिफोर it goes to the government. So let me take an example. Let's say K is the company who has taken a loan from, let's say, SBI bank. Okay, तो SBI बैंक से लोन लिया, उसने डिफॉल्ट कर दिया, तो नाउ K कंपनी को बेचा जाएगा मार्केट में एंड अटैच करके बेचा जाएगा. तो देन वट एवर द प्रोसीडर्स विल कम फ्रॉम दिस K कंपनी बाय सेलिंग दिस कंपनी, फर्स्ट इट विल गो टू द सिक्योर्ड क्रेडिटर. देन लेट्स से इस कंपनी को गवर्नमेंट को कुछ पे करना था, तो वो सबसे लास्ट में आएगा, तो गवर्नमेंट विल कम टुवर्ड्स द एंड while getting the credit. तो इसको हम विल IBC में भी इसका कॉन्सेप्ट है, हाउ द मनी विल फ्लो बाय सेलिंग द एसेट्स ऑफ द कंपनी, कि सबसे पहले किसको मिलेगा फिर किसको मिलेगा, वो हम करेंगे IBC कोड में, सरफासी एक्ट को भी बैंकिंग के पार्ट में हम करेंगे. तो नेक्स्ट इज द रैपिड थिंग, और इसको याद रखना है, रैपिड का फुल फॉर्म रेवेन्यू अकाउंटेबिलिटी प्रोबिटी इंफॉर्मेशन एंड डिजिटलाइजेशन. किसके लिए? टैक्स के लिए. टैक्स यहाँ लिखा नहीं है कहीं, बट रेवेन्यू कहाँ से आएगा गवर्नमेंट का? मेजर इज फ्रॉम द टैक्स. टैक्स से अकाउंटेबिलिटी, प्रोबिटी, information, digitalization, all those stuff is to make the tax compliance more friendly, more transparent and widening the tax basis. So tax जब ज़्यादा आएगा तो fiscal deficit will automatically reduce. Okay, so then definitely it will going to help the economy. So rapid क्या है that you should understand, and this is the mechanism. These are the few steps which the government has taken, but as per the government has not been acknowledged by the World Bank. तो अगर वर्ल्ड बैंक इनको एक्नॉलेज करता है तो अवर रैंकिंग कैन बी बेटर देन 100 एज वेल. ओके, 100 रैंकिंग है, इंप्रूवमेंट हुआ है 30 का, बट 100 रैंकिंग ओवरऑल ओवर द वर्ल्ड यू शुड नॉट मीन्स वेरी कॉम्प्लेसेंट, कितना अच्छा रैंकिंग आ गया. ओके, सो नाउ हमेशा जब भी वर्ल्ड बैंक का रैंकिंग आता है तो गवर्नमेंट यही बोलते हैं, अपना तूती बोलते हैं कि येस हमने ये किया है, हमने XYZ थिंग किया, आपने माना नहीं है तो आप अच्छे नहीं हो. सो दिस स्लाइड इज समराइजिंग ऑल ऑफ द स्टफ. वर्ल्ड बैंक इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, रैंक 100, IBC code, administration, reform in taxation, passive insolvency code, lived 53 and 33 post in taxation insolvency indices. These are the various indexes or the various parameters on which we are talking about the ranking. Further, which is the thing which is pinched the economic survey the most, and for that we are having the full one chapter of economic survey, is लैग ऑन इंडिकेटर ऑफ इन्फोर्सिंग द कॉन्ट्रैक्ट. ओके, हमने कॉन्ट्रैक्ट में इंप्रूवमेंट किया फ्रॉम 172 टू 164, बट स्टिल वी आर बिहाइंड द कंट्री लाइक पाकिस्तान, कोंगो एंड सूडान. ओके, so now we will have going to have a dedicated video on this part कि how we can improve or how what the suggestion economic survey has given for improving the enforcing the contract part.